हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेस एडिशन ऑफ दिस डेली न्यूज डाइजेस्ट। आज फिर हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, जिसमें सम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम इंडियन एक्सप्रेस आई विल बी टेकिंग। अलोंग विद इट आई विल बी शोइंग यू सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दोज टॉपिक्स एंड दोज आर्टिकल्स जो फ्रेम किए जा सकते हैं यूपीएससी प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से। सो लेट्स स्टार्ट। आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन हियर। You can see the first article, which is household spending on food rises in rural areas, shrinking gap with urban centers. So this first article is regarding the latest data fact sheet published by this household consumption expenditure survey 2023 and 24, and this is released by Ministry of Statistics and Program Implementation. So ये जो sheet है ये बताती है, this survey is telling us that the declining trend from over a decade, the share of food in monthly expenditure of households in rural as well as in urban areas, both the areas, went up or increased in 2023-24, according to this survey. Now, this particular increase is probably reflecting the impact of higher food prices. So ultimately ये बोल रहा है जो food consumption है, जो स्पेंडिंग ऑन फूड कंजम्पशन है इन रूरल एंड अर्बन एरियाज दोनों में, इसका परसेंटेज जो है वो इंक्रीज हुआ है। सो ये इंक्रीज होने का एक रीजन ये भी हो सकता है कि जो फूड प्राइसेस हैं वो इंक्रीज हायर एंड पे रही है इस पूरे साल में। तो दिस प्रोबेबली ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स द इम्पैक्ट ऑफ हायर फूड प्राइसेस। Given that the figures are in nominal terms, the share of food in the consumption basket of rural household went up to 47% in 2023-24 from 46.3% in 22-23 last year के comparison. While that for the urban households, urban की बात करें, it also increased to 39.68% in 23-24. So दोनों में ही increment देखने को मिला है। The last year it was 39.17%, जो इंक्रीज हुआ 39.68% पे। ठीक है। नाउ द क्लोजर लुक एट द डाटा रिवील्स दैट the top 5% of the rural and urban population saw a decrease in consumption spending in 2023-24, even as all the above segment of the population, including the bottom 5%, registered an increase in spending. सो ये बोल रहा है कि हम जब टॉप 5% कंसिडर करें रूरल एंड अर्बन एरियाज में, उसमें हमें डिक्रीमेंट देखने को मिला है इन कंजम्पशन स्पेंडिंग इन 23-24 दिस ईयर एज कम्पेयर टू 22। ठीक है। तो टॉप 5% और टॉप बॉटम 5% को इसमें कंपेयर किया है। नेक्स्ट हम डाटा देखें, दिस एक्सपेंडिचर बिटवीन रूरल एंड अर्बन एरियाज में जो डिफरेंस है हाउस होल्ड, इट नेरोड फर्दर टू 69.7% इन 23-24 फ्रॉम 71.2% इन 22-23। सो ये डाटा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो डाटा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, द अर्बन रूरल गैप इन मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर। मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर हैज डिक्लाइन टू 71% इन 22-23 फ्रॉम 84% इन 2011 एंड 12। तो 2011-12 से हम कंपेयर करें, सो एज यू कैन सी इन दिस टेबल, द रूरल मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर ऑन फूड आइटम्स, ये जो देखेंगे हम 2011-12 में इट वाज 83.9%। डिफरेंस इस परसेंटेज की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट डिफरेंस की बात करें तो 22-23 में 71.2% था, और दिस ईयर इट फर्दर डिक्लाइन टू 69.7%। सो दिस इज अ वेरी गुड न्यूज दैट द अर्बन रूरल गैप इज डिक्लाइनिंग। Next data, which is important, is the urban average monthly consumption expenditure per person had stood at 2,630 per person in 2011-12. This seems to suggest that the pace of spending is more in rural India compared with the urban area population, which seems to be cutting down on its consumptions. तो food price या उसमें फूड के ऊपर जो एक्सपेंडिचर है, फूड एक्सपेंडिचर पर कैपिटा, इसका जो इंक्रीमेंट का पेस है वो रूरल एरियाज में ज्यादा है एज कम्पेयर टू अर्बन एरियाज। Then it is evident that other data set also that show a rise in spending by top segment, especially on premium goods. Every fractile class has shown an increase in consumption except the top fractile, which is opposite to the trend being seen in other data sets. ठीक है, जैसे हमने टॉप 5% की बात की थी। Now this survey were earlier done once every 5 years. तो अभी जो सर्वे किया है वो this is because of this change in methodology of this survey. तो इसको चेक करने के लिए एवरी ईयर अभी डाटा
लिया जा रहा है। नेक्स्ट जो रहेगा वो रहेगा दिस सर्वे हाउएवर पॉइंट्स आउट दैट द कंजम्पशन इन इक्वालिटी या कंजम्पशन इन इक्वालिटी बोथ इन रूरल एंड अर्बन एरियाज हैज डिक्लाइंड कंपेयर्ड विद 22-23। तो इसमें गिनी कोएफिशिएंट एक टर्म मेंशन है जो स्टूडेंट्स को रीड करना चाहिए। ये दिस इज ए सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमी स्टैटिक पार्ट। तो वहां पर आपको बताएंगे हाउ इट रिप्रेजेंट द इनइक्वालिटी, परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन और परसेंटेज ऑफ इनकम को हम जब अलग अलग एक्सिस पे ट्रैक करते हैं तो उसको डिवाइड करते हैं तो हम गिनी कोफिशिएंट आता है। देन गिनी कोफिशिएंट की वैल्यू जो रहती है इट रेंजेस फ्रॉम 0 to 1। तो ये स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए कि 0 कब रहेगी, 1 कब रहेगी, परफेक्ट इनइक्वालिटी कब होगी, परफेक्ट इक्वालिटी कब होगी। सो दीज आर दी बोथ एंड्स ऑफ दिस गिनी कोफिशिएंट। सो अल्टीमेटली ये बोल रहा है इफ इनइक्वालिटी डिक्रीजेस so the Gini coefficient declined to 0.237 in 23-24 from 0.266 in 22-23 for rural areas. And for urban areas, it declined from 0.314 to 0.284। एक साल में इतना डिक्रीमेंट इसमें देखा गया है। देन अमंग फूड आइटम्स द शेयर ऑफ सीरियल्स, इसमें अलग अलग इसके शेयर दिए हैं। इसका डाटा हमें याद रखने की जरूरत नहीं है। सीरियल्स का कितना है, एग एंड फिश का कितना है, मीट का कितना है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में। नॉन फूड आइटम्स की बात करें, द शेयर ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ नॉन फूड आइटम stood at 52.96% and 60.32% in rural and urban households रिस्पेक्टिवली। ये अलग अलग ईयर्स दोनों साल का डाटा इसमें दे रखा है। अब नॉन फूड आइटम्स में क्या क्या एक्सपेंडिचर आता है, तो जनरली देयर इज ए लिटिल डिफरेंस बिटवीन एक्सपेंडिचर ऑन नॉन फूड आइटम्स इन अर्बन एरियाज एंड इन रूरल एरियाज। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। कन्वेंस, जैसे कन्वेंस है, मेडिकल एक्सपेंसेस है, क्लोथिंग है, देन दैट फुटवेयर, ये इस टाइप के कंजम्पशन जो रूरल इंडिया में ज्यादा होता है नॉन फूड आइटम्स। And in urban areas, the spending on non-food items was mainly on account of convenience, then miscellaneous goods and entertainment and durable goods, and also rent. Rent is also non-food item expenditure. तो इस टाइप से ये डाटा हमें ट्रैक करना है। इसमें हमें स्टेट वाइज डाटा पे जाना नहीं। I'll show you one question which can be framed from this particular article. Here you can see. Consider the following statements regarding the share of food in household consumption expenditure. इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट बोल रहा था शेयर ऑफ फूड इन हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर इन रूरल एंड अर्बन एरियाज हैव बीन डिक्लाइनिंग ओवर लास्ट डिकेड। कंटिन्यूसली डिक्लाइन हो रहा है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये इसका उल्टा बता रहा है कि इट इज इन कंटिन्यूस डिक्लाइन मोड। बट हमने अभी देखा कि 2022 से 23 में क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। सेकंड ऑप्शन, अकॉर्डिंग टू हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे the share of food in consumption basket of rural household increased in 2023-24 and as compared to 22-23। तो this statement will be correct कि household consumption में rural household का जो consumption है वो increase हुआ है in food। Next, the share of food in consumption basket of urban household remained the same in 23-24 compared to 22-23। ऐसा नहीं है, सेम नहीं है। अभी हमने देखा कि दोनों का ही कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इंक्रीज हुआ है रूरल एंड अर्बन एरियाज का। हाँ, दोनों का इंक्रीमेंट का जो पेस है वो अलग अलग है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। इट वाज नॉट सेम। ठीक है। नाउ द इंक्रीज इन द शेयर ऑफ फूड इन हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर इज लाइकली ड्यू टू हायर फूड प्राइसेस। हमने अभी रीजन देखा है, इट मे बी ड्यू टू, इज लाइकली ड्यू टू हायर फूड प्राइसेस। तो ये एक जनरल स्टेटमेंट है, सिंपल स्टेटमेंट है। दिस इज नॉट एन एक्सट्रीम स्टेटमेंट। जैसे फर्स्ट स्टेटमेंट हमने देखा, इट वाज एन एक्सट्रीम स्टेटमेंट, बीन डिक्लाइन ओवर लास्ट डिकेड। ठीक है। तो इसमें दो ऑप्शंस गलत हो जाएंगे, 2 and 4 विल बी द आंसर। 2 and 4, ये सेकंड सही है एंड फोर्थ ऑप्शन सही है। बाकी जो फर्स्ट एंड थर्ड है ऑप्शन दोनों ही रॉन्ग ऑप्शन है। सो दिस क्वेश्चन कैन बी फ्रॉम दैट पर्टिकुलर आर्टिकल। नेक्स्ट जो है सेकंड आर्टिकल वी आर गोइंग टू टेक इज रिगार्डिंग दिस पीएम केयर्स फंड रिसीव्स रुपीज 912 करोड़ कॉन्ट्रीब्यूशन इन ईयर आफ्टर कोविड पेंडेमिक। तो अब हम इसका जो स्पेसिफिक कॉन्ट्रीब्यूशन है वो याद नहीं रखना है, वो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है। बट इस पूरे आर्टिकल में हमारे लिए इंपॉर्टेंट है पीएम केयर्स फंड। तो हम इसका डिस्क्रिप्शन यहाँ पर देखते हैं जो दे रखा है। फॉर एग्जाम्पल हियर इज दिस डाटा इज नॉट इम्पॉर्टेंट। सो ये डाटा जो है सिर्फ ट्रेंड बता रहा है और इट इज ऑल्सो टॉकिंग अबाउट द पोस्ट पेंडेमिक कॉन्ट्रीब्यूशन इन द पीएम केयर फंड। सो हम इसमें देखेंगे, फॉर एग्जाम्पल द पीएम केयर फंड was registered as a public charitable trust under the Registration Act 1908 in New Delhi। ठीक है, फर्स्ट थिंग ये पॉइंट याद रखना है। देन सेकेंड, it was set up keeping in mind the need for having a dedicated fund with the primary objective of dealing with any kind of emergency or distress situation like posed by COVID-19 pandemic and to provide relief to the affected। ठीक है,
for providing relief to the affected in case of any kind of emergency or distress situation such as COVID-19. तो ये इसका aim था. Third, the Prime Minister is the ex officio chairman of the PM CARES Fund, while the Defense Minister, Home Minister and Finance Minister are ex officio trustees of the fund. ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है. नेक्स्ट एक दो पॉइंट्स है जो और इंपॉर्टेंट है, जैसे फॉर एग्जांपल द फंड्स वेबसाइट स्टेट्स दैट द डोनेशन टू पीएम केयर्स फंड वुड क्वालिफाई फॉर द बेनिफिट फॉर 100% एग्जेम्पशन अंडर इनकम टैक्स एक्ट ऑफ 1961. तो ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट हो जाता है. नेक्स्ट, the donation of PM CARES fund will also be qualified to be counted as the CSR activities, the CSR expenditure, corporate social responsibility under Companies Act of 2013. तो CSR activities के अंडर भी आप डोनेशन कर सकते हो, and that will be counted as your CSR contribution, corporate social responsibility contribution. जो obligations जितने हैं कंपनीज के ऊपर कितना आपको कंट्रीब्यूट करना है, तो that can be shown by contributing to this particular PM CARE fund. ठीक है, तो इस टाइप से कुछ इसमें इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं पीएम केयर्स फंड के, और इसका बैकग्राउंड है जो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए एग्जाम पर्सपेक्टिव से. वन क्वेश्चन आई विल शो यू व्हिच कैन बी फ्रेम्ड हियर इज द कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग पीएम केयर्स फंड. इसमें मैंने जो सेम ऑप्शंस हमने डिस्कस किए हैं वो पुट किए हैं. जैसे फॉर एग्जांपल, इट कैन बी आस्क्ड दैट पीएम केयर फंड वाज एस्टैब्लिश्ड एज अ पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट अंडर रजिस्ट्रेशन एक्ट ऑफ 1908. सो दिस स्टेटमेंट विल बी करेक्ट. सेकंड, द fund was set up to specifically address emergencies like COVID-19 pandemic. This is also true. Third, the donation to the PM Care Fund are eligible for exemption under the Income Tax Act. अभी हमने देखा है, it is there is 100% exemption under this Income Tax Act. Fourth, it cannot be counted as CSR expenditure under the Companies Act of 2013. So this statement will be wrong. It can be counted as, अपने को स्टेटमेंट्स में जो ऑप्शंस में टर्म्स है उनको अच्छे से पढ़ना है कि ये अफर्मेटिव है नेगेटिव है. तो इट कैन नॉट बी काउंटेड, कैन नॉट को अच्छे से रीड करना, कैन नॉट बी काउंटेड एज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. सो दिस विल बी रॉन्ग. इट कैन बी काउंटेड एज सीएसआर एक्सपेंडिचर अंडर दिस कंपनीज एक्ट ऑफ 2013. सो स्टेटमेंट्स कौन से सही हो जाएंगे? 1, 2 and 3 विल बी करेक्ट. आंसर विल बी ए. 1, 2 and 3. 4 विल बी इनकरेक्ट. ठीक है, सो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन कैन ऑल्सो बी framed from this article. So these are the two articles which are important from the Indian Express. Now with this I will end my discussion here, and thank you so much all. Thank you. Hello. Today I am going to discuss some of the important article of the Hindu. The very first article that I am going to discuss is related to China's recent, decision to construct a dam on the Brahmaputra river. So why it is very much, a matter of concern for India, because India is a lower riparian region of the Brahmaputra river, and the dam is planned to be constructed very close to Arunachal Pradesh. So what China is saying, first of all, it has approved the construction of this dam, and the China is saying the project will not negatively affect the lower reaches. और जो लोअर रीचेज में इसकी जो कंट्रीज है वो है इंडिया, एंड देन कम्स द बांग्लादेश. तो ये दो कंट्रीज हैं जो 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 जो, जो लोअर रीजन में आते हैं. दे हैव द कंसर्न कि इन केस ऑफ एनी एनी इंसिडेंट दैट डैम रिलेटेड वाटर, जो वहाँ पे रिजर्व में हम वाटर रख रहे हैं, दैट इज गोइंग टू क्रिएट हैवॉक इन दिस कंट्रीज. तो व्हाट चाइना इज सेइंग, see, we have done lots of research and development related to this dam, and the impact is significantly countered by the technology and many others thing. तो यहाँ पे हमें क्या देखना है, तो कंस्ट्रक्शन, ओवरऑल कंस्ट्रक्शन की जो इसमें बजट है, दैट इज 137 billion कॉस्ट होगा इसका. एंड द प्रोजेक्ट इज बीइंग क्रिएटेड इन द इकोलॉजिकली फ्रेजिल हिमालयन रीजन, एंड along this region is also very tectonic plates है, यहाँ पे boundaries है, and there are cases of frequent earthquake. So as we know, in case of earthquake, it is very much possible that a dam may be damaged. In that case, the lower जो lower region में जो states हैं, तो जो countries हैं, that is going to bear the impact of that disaster. तो और इंडिया के लिए दिस डैम इज मेनली ए कंसर्न बिकॉज इट इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड वेरी क्लोज टू अरुणाचल प्रदेश. वहां पे जो यू टर्न है
through that U-turn, after that U-turn, the rivers enters into the India. So kahin na kahin, this dam may be, a geopolitical, geostrategic tool for China also. So this is why India is raising its concern. So from this article, you are getting a point. अगर आप चाइना इंडिया रिलेशनशिप के बारे में आंसर लिख रहे हो तो यू कैन मेक ए पॉइंट हियर कि दिस इज अ मैटर ऑफ कंसर्न बिटवीन इंडिया एंड चाइना. दूसरी आर्टिकल की बात करें तो इट इज द फर्स्ट एडिटोरियल ऑफ द Hindu, and this title of this article is marginalized by the caste, marginalized in education. This article highlights ki how the students of lower caste, mainly scheduled tribe and scheduled caste जो students है, how they are getting marginalized in the higher education. In this article, it is highlighted ki one student from Dhanbad, he got admission in the IIT, and he was not able to secure his admission because of the जो booking fee होती है, he was not able to pay that booking amount. So in this case, Supreme Court take the cognizance and intervene किया through this Article 142 to grant him admission. So this article highlights कि there are not just one student, there are many students from the marginalized section of the segment of the society, and how this high tuition fees affecting their education. So first of all, this article talks about the rise in tuition fee. Why this tuition fee increased many fold within 5 or 6 years. तो इसमें जो आत्म भारत अभियान जो गवर्नमेंट ने चलाया, तो थ्रू दिस अभियान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज बीन पुशिंग फॉर सेल्फ रिलायंस इन इंस्टीट्यूशंस, गवर्नमेंट कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी सच एज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंडियन IIM की बात की गई है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की बात की गई है. बिकॉज ऑफ दिस self reliance because of this self reliance the tuition fee is getting increased. यहाँ पे एक केस स्टडी दिया गया कि in 2016 आईटी की जो काउंसिल की स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग हुई थी, दैट मीटिंग दे इंक्रीज द फी बाय 200%. फॉर एग्जांपल जो 2016 में 90,000 फी था पर सेमेस्टर, वो इंक्रीज होके 3 लाख हो गया. तो कहीं ना कहीं दिस इनिशिएटिव ऑफ द गवर्नमेंट वाज क्रिटिसाइज्ड बाय मेनी पीपल. तो गवर्नमेंट ने काउंटर किया कि जो विद्यांशी स्कीम है, विद्या लक्ष्मी स्कीम है, तो थ्रू दिस विद्या लक्ष्मी स्कीम द स्टूडेंट्स ऑफ मार्जिनलाइज्ड सेगमेंट विल गेट हेल्प. तो इसमें क्या होता है, दिस स्कीम इट ऑफर्स इंटरेस्ट फ्री स्कॉलरशिप टू द स्टूडेंट्स हु आर फ्रॉम द मार्जिनल सेगमेंट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी. Still there is many problems. ठीक है, all the students are not getting the benefit of this scheme, and because of that the frequent hike in fee have made it increasingly difficult for the students from the marginalized community to afford higher education or even pursue studies through loans. तो ये मेन इशू है. दूसरा यहाँ पे एक इशू हाईलाइट किया गया कि द इशू ऑफ ड्रॉप आउट. तो वाई large scale dropouts happening in the higher education, and the good number of those dropout students are from this segment. तो यहाँ पे बात किया गया है कि जो एक डेटा है, the Human Resource Development Ministry reported that 2,461 students dropped out of IITs in just 2 years. और जो ईयर की बात कर रहे हैं हम, that is 2017 and 18. तो why this data is really big data है, और this highlight the challenges की drop out का higher education में भी क्या अभी situation चल रहा है. So why this is happening? This is happening because of the financial burden on the student side. The number highlights the significant challenge faced by the marginalized community in assessing the stand and sustaining higher education in India. तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो लोअर जो SC/ST community के लोग हैं, they are not able to afford the money required to pursue that education in the long term. दूसरा यहाँ पे एक हाईलाइट ये किया गया कि वन ऑफ द की रीजन बिहाइंड द पुअर इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द दलित कम्युनिटी is their identity in India is still largely defined by caste. Not just identity, but also the work they are going to perform. It's also by and large attached with the caste. तो ये एक रीजन यहाँ पे हाईलाइट किया गया. और यहाँ पे दूसरी सेकंड थिंग जो हाईलाइट किया गया, the historically this stigmatization has meant that Dalit has been denied access to education. जहां तक की बात करते हैं कि even in nowadays we are
we are getting news in some government school, Dalit students are being asked to sit in the separate area, separate row. तो ये जो हिस्टोरिकल डिस्क्रिमिनेशन है, वो तो मार्जिनलाइज सेगमेंट को कहीं ना कहीं एजुकेशन की एसेस में हर्डल क्रिएट किया, बट स्टिल दे आर फेसिंग प्रॉब्लम. यहाँ पे एक रिसेंट सर्वे इन 29 स्टेट्स की गई थी, जिसमें अर्बन सीवर की बात और सेप्टिक टैंक जो क्लीनर्स की बात कर रहे हैं, तो उसमें 92% ऑफ दोज वर्कर्स बिलोंग्स टू द शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड अदर बैकवर्ड क्लास. तो ये बहुत सिग्निफिकेंट नंबर है, जिसमें कि 95% of those workers who are who are doing manual scavenging is from this segment of the society. फिर यहाँ पे जो दूसरा डेटा है कि 95% of the faculty positioned in IITs were held by the individual from the upper caste background. So this discrimination you can see through this data also. दो लास्ट पार्ट की बात करें इस आर्टिकल से, तो बैरियर स्टिल एग्जिस्ट. जो बैरियर की बात करते हैं, दैट इज बाय एंड लार्ज अटैच्ड विद द कास्ट, दैट इज स्टिल एग्जिस्टिंग इन आवर सोसाइटी. तो दिस आर्टिकल हाइलाइट्स कि द आफ्टर इंडिपेंडेंस ओवरऑल schooling of the schooling of the students from this community improved. However, caste based discrimination is still being faced by the student of this community. और दूसरा ये है कि कास्ट बेस्ड रिमार्क्स एंड डिस्क्रिमिनेशन वुड दिस स्टूडेंट लीडिंग टू सोशल आइसोलेशन बिकॉज ऑफ दैट. जैसे मैंने बोला कि इन सम स्कूल देयर इज सम न्यूज दैट कि दलित बच्चे को बोला गया कि आप अलग बैठो, यू नीड टू सीट समवेयर एल्स एंड दिस टाइप ऑफ थिंग्स. तो कहीं ना कहीं ये स्टिग्मेटाइजेशन लीड्स टू आइसोलेशन और डिस्क्रिमिनेशन लीड्स टू आइसोलेशन ऑफ दीज स्टूडेंट्स. तो इसको भी हाईलाइट किया गया है. And in the third part, the article is saying the unfortunate incident of a student's suicide point to the immense pressure a student faces in the education system. First challenge, they are not able to fulfill the tuition fee of the education. दूसरा है कि if they are how somehow managing all those things, they are not able to get the job after the education. तो कहीं ना कहीं because of all these pressures, the students are committing suicide, and this is a very big concern. For example, RTI through an RTI in 2024, some information came out, and according to that information about जो प्लेसमेंट की बात की जाए, तो इसमें क्या था कि आईटी प्लेसमेंट showed that approximately 8,000 students, that is 38% of the overall student across 23 IIT campus remain unplaced this year. So if your parent is supporting you in your education, somehow managing all the required funds, they expect you to get the job and improve the overall situation of the family. And if you are not getting employed because of any reason, because of economic slowdown, तो कहीं ना कहीं आप पे प्रेशर बिल्ट होता है. ऑल दिस प्रेशर्स लीडिंग टू दिस causing the high number of suicides, जो यहाँ पे हाईलाइट किया गया आर्टिकल्स में. लास्ट पार्ट में ये करता है कि दिस इशू अंडरस्कोर द pressing need for systemic reforms in education and employment to alleviate the pressure on students and address caste-based disparities. तो कहीं ना कहीं we need to resolve this issue through a systematic reform. Education sector में we need to bring बहुत ही important article है. There is lots of information you can make and you can expect question from this type of articles in the mains paper 1 जो social issues है, वहां पे आप इसमें मेंस में क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं. देयर इज अनदर आर्टिकल्स दैट इज टॉकिंग अबाउट द रूल्स दैट स्टिल manacle the captive elephants. This article highlights ki what are the shortcomings because of that this elephant in general is being you can say कि कहीं ना कहीं एक्सप्लॉइट की जा रही है. तो यहाँ पे हाईलाइट किया गया कि एलिफेंट यूज फॉर रिलीजियस पर्पसेस, entertainment and tourism are subjected to much cruelty and forced to behave in unnatural way. कहीं ना कहीं केरला हाई कोर्ट ने इसको नाजी एक्सटर्मिनेशन कैंप से इस जो कैप्टिव एलिफेंट्स को ना कंपेयर किया था. और दिस आर्टिकल ऑल्सो हाईलाइट्स कि जो हमारा जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 है, इट गिव्स हाईएस्ट प्रोटेक्शन टू एलिफेंट. स्टिल
they are facing lots of problems, lots of challenges in captivity. So for to counter all these issues, the Ministry of Environment, Forest and Climate Change published the captive elephant transfer and transport rules in 2000 March 2024 to address all these challenges. But still this article highlights की loophole in this 2024 में जो rules आए उसमें क्या loopholes है. So first loopholes that is highlighted by this article is the rules also provide for transport of the elephant temporarily, and there is no explicit requirement to justify the transportation. As we know, majority of the exploitation, majority of the torture happening because of this transportation in the form of marriage, religious ceremonies, wedding, और इन्हीं सब कारणों से ये एलिफेंट जो है वो एक्सप्लॉइट की जा रहा है. एंड एग्जिस्टिंग रूल जो 2024 में आया दैट इज अलाउइंग इट. तो पहला ये एक शॉर्ट कमिंग्स हाईलाइट किया गया. दूसरा ये हाईलाइट किया गया माइक्रो चिपिंग मिसयूज birth in captivity. What happens if you have a elephant in as a private property, so government asked all the owners to implant a chip, micro chip, so that they can monitor all the captive elephants. So what the people are owners are doing na, they are manipulating it. They are manipulating after certain age the elephant dies, है ना. So they are buying elephant from the wild, एंड जो जो माइक्रोचिप होता है उस नए एलिफेंट को पहना देते हैं और उस पुराने एलिफेंट के ही नाम पे उसको कंटिन्यू कर देते हैं. तो दिस इज द प्रोसेस एंड इट इज स्टिल गोइंग ऑन. और जो नया रूल आया इसके लिए कोई काउंटर नहीं आया. तो कहीं ना कहीं देयर शुड बी सम रूल सो दैट कि देयर शुड बी द प्रोविजन ऑफ कि ये जो माइक्रोचिप हम इम्प्लांट करते हैं इट शुड बी डन इन फ्रंट ऑफ द फॉरेस्ट ऑफिशियल, और देयर शुड बी द प्रोविजन ऑफ पोस्टमार्टम ऑफ द एलिफेंट आफ्टर डेथ. तो ये स्टिल अभी ये जो शॉर्ट कमिंग्स है ये भी अभी कंटिन्यू है. और तीसरा ये है कि द न्यू रूल्स हैव सर्व्ड एज इनेबलिंग एजेंट फॉर ट्रेड इन द इंडेंजर्ड स्पीसीज. कहीं ना कहीं वी ऑलवेज सी कि elephants are being transported from the northeast region to the southern states. तो ये जो एक लूप होल्स पहले से थी उस लूप होल्स को कहीं ना कहीं जो एग्जिस्टिंग रूल है इसको प्रमोट कर रहा है इंस्टेड ऑफ काउंटरिंग दिस लूप होल्स. तो दिस इज द बेसिक टेक अवे ऑफ दिस आर्टिकल. थ्री की इंफॉर्मेशन है कि हाउ दिस न्यू रूल इज नॉट गोइंग टू बी वेरी इफेक्टिव इन काउंटरिंग द इशू दैट इज बीइंग फेस्ड बाय द एलिफेंट्स. तो ऐसे क्वेश्चन ऐसे आर्टिकल से, जो पहला आर्टिकल हमने जो एजुकेशन से सोशल वाला बात किया, तो उस पे आप मेंस का क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि डिस्कस द चैलेंजेस फेस्ड बाय द स्टूडेंट्स फ्रॉम मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी इन असेसिंग क्वालिटी हायर एजुकेशन इन इंडिया, हाईलाइट द इम्पैक्ट ऑफ राइजिंग ट्यूशन फी, systemic caste-based disparities and institutional barriers on their education outcome, suggest measures to provide inclusivity and quality in higher education. 2050 words में you have to write the answer. After writing you can submit it on KSG. अगर जो जिसके लिए एक email dedicated email है evaluation@ksgindia.com, it will be evaluated and you will receive your evaluated answer. So this is all from my side. Second part of the Hindu will be covered by the Gaurav sir. Thank you. Hello and welcome to today's edition of Daily News Digest. So today is 28th of December and we have some articles to be discussed from today's edition of the Hindu. So let's begin. So the very first article says that from a study that there has been a rise in enrollment after smart class initiative to the tune of 22%. And so let's delve into this article. So introduction of a smart classroom under the smart cities mission has led to 22% increase in the overall enrollment as per the data reported by 19 cities between 2015-16 till 2023 and 24. So it was reported, this data was compiled from 19 cities. So it is a good fact to remember. Then it was a national level study, and it was found that 71 cities have developed 9,433 smart classroom in 2398 government schools. So it is basically targeting the government schools.
So it is also important fact for it. And then there's like given figures that Karnataka is topping in terms of having the highest number of classroom equipped with the smart boards. So Karnataka followed by Rajasthan, Tamil Nadu. So you not need to remember these things, but you can keep this in mind. Okay. So according to the report, teachers have also given their feedback and they are feeling comfortable while using the smart boards, and they are so saying that it is well, its purpose is getting fulfilled. Okay. So classroom initiative is improving the learning experience and attendance of the student across the select smart cities of the country. So you can always cite these as a case studies if some questions come in this regard, area regarding the how you can improve the education in the like area that are not doing well in the education. So these are like if you are asked to write how you can overcome the challenges in these sort of areas, you can mention these sort of case studies. So apart from it, apart from the class, the smart classroom, a library was also initiated. A smart library was also initiated under this smart cities mission, and 41 cities come under this scheme, and they have developed digital libraries totaling 7,800. Okay. But now coming to like what is this smart cities mission? You should learn, you should get to know about this thing, because it is under this mission that this smart classroom has been initiated. So smart cities mission was launched by the Ministry of Housing and Urban Affairs in June 2015. So it was like in the very first year of this current government when it came to the power, it has it thought to give a fillip to the how cities should be managed. So the objective of mission was to promote cities that provide core infrastructure and give a decent quality of life to the citizens. So it the mandate of smart cities mission was to like synergize the whole city infrastructure together. Earlier it was working in silos. Now the smart city mission envisaged that they should work in tandem. Okay, so it was the basic idea of launching the smart cities mission, and where a citizen can avail a clean and sustainable environment and application through the application of smart solution. You need smart solution for the problem. So smart cities was using a smarter solution to solve the problems, cities problems. Okay, so as on November 2024, 91% of project under the smart cities mission have been completed according to ministry of, it comes in the Ministry of Urban Development. Okay, so you can you should remember this fact. The mission launched a platform in 2022 named SAR, Smart Cities and Academia Towards Action and Research. And under this vision, this smart classroom initiative has been launched. So you should remember this scheme, because generally schemes are asked in the UPSC examination, particularly in the prelims stage. Then uh, to bring what was the purpose of this SAR mission? To bring together the academia and government to document and research new urban initiatives. Then under this SAR initiative, the Smart Cities mission has initiated 50 impact assessment research studies as Samiksha. This is also one fact word that you should remember, you should make note of. So 29 premier institutes are involved in this Samiksha program, and among this is like IITs, IIMs, and other institutes as well. So this is takeaway from this article. Moving to now next article, it pertains to your like science and technology domain, particularly important for your prelims stage. So IIT-Bombay team makes needle-free uh, shock syringe for the painless injection. We all in our life have feared needles once or many times. I even fear it even now also. So there may be many of like me among you. So for the relief of many of us like us, IIT-Bombay has come up with some innovative solution. So in a welcome move for the patient who have fear of needles, a team of researchers at Indian Institute of Technology, Bombay has launched a needle-free shock syringe. So the key takeaway
from this article is that how this works. It working is a bit different, so a question can be framed from that section only. The the researcher tested the effectiveness of drug delivery by shock syringe on the laboratory rat. It was tested. Right now it is not tested on the humans, but on the laboratory rats only. Unlike syringes with needles, the shock syringe does not rely on piercing the skin with a sharp needle. Instead, it uses high energy pressure waves, that is shock waves, that can travel faster than the speed of sound to pierce the skin. These waves, when generated, compress the surrounding medium, such as air or liquid, through which they travel. A similar effect, you can think of a similar effect that happens during a sonic boom when an aircraft flies faster than the speed of sound. So you should always know that when a plane breaks the sound barrier, it creates a thumping sound. It is called boom. That is a sonic boom, and you can know that the speed of the aircrafts, fighter jet today, are greater than the speed of sound. So we have like Mach 1, Mach 2, Mach 3. It indicates that at how much more speedier it is than the speed of sound. So even a question was asked in this year UPSC prelims exam regarding the max speed of the aircraft carriers. So aircraft carrier, the fighter jets. Okay. So now working mechanism of this syringe is that it consists of three parts. The device has a micro shock tube consisting of three sections: the driver, the driven, and the drug holder, which work together to create a shock wave driven microjet for drug delivery. So nitrogen gas is used for generating the pressure. Okay, so pressurized nitrogen gas is applied to the shock syringe, and that is the driver section of the micro shock tube part, which is filled with liquid drug to create a which then lead to the micro injection of the drug. The microjet travels at a speed nearly twice as commercial aeroplane at the takeoff. So these are the important facts that you should make note of, because UPSC is very fond of this sort of information. And then the researchers who have developed this project has said that development of shock syringe promises more than pain-free injection. It could make immunization drives quicker and more efficient for both children and the adults. And these shock syringes are replaceable and are can be used time and time again also. So this also save the cost also. So shock syringes are designed to perform multiple drug delivery shot. Example is given, it can be like over 1000 also, offering reliability and cost effectiveness. So it can be used again, unlike the today vaccine, which need to be destroyed after each immunization drive. Okay, so it is important article, and you should make note of the facts given in this article. So moving to now next article, it's about potential economy domain. Okay, so the current account deficit eased in Q2, but may double in the Q3. So India current account deficit for the July-September period, or the Q2 of the 24-25 financial year, has moderated marginally to like 1.2% of the GDP, which tunes about $11.2 billion. So what you need to understand from this article is that what constitute a current account deficit, what constitute a balance of payment. Okay, so current account is a part of your larger balance of payment purse. Okay, so current account is basically your transactions with world across. It is spread across, like you have trade account, you have services account, and so you have trade, merchandise trade, which we do in goods, and then you have services exports and import, that makes a services trade. Okay, clubbing these together, and then the interest we are earning from world across make the current account. Okay, so India generally have always have a current account deficit, because we are import driven country. We import lot of fossil fuel, sort of like oil, from the other countries, which we need to give in the dollars also.
our export are also rising over the years, so that the current account deficit, which was earlier very larger, has shrank. So last year it was below 1% also. Now it was this year economic survey said that we should keep our current account deficit to the tune of 1.1% in the 2024-25 फिजिकल ईयर. ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है. देन आप समझिए कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है. सो वी हैव लाइक एक ट्रेड डेफिसिट हमने देखा, उसके करंट अकाउंट देखा, उसके बाद कैपिटल अकाउंट भी होता है. लाइक हाउ मच मनी एफडीआई एंड एफआई हैव पोर्ड इन, लाइक एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग से कितना पैसा हमने लिया है. तो ये कैपिटल अकाउंट का पार्ट करता है. हमने लोन्स कितने लिए हैं वर्ल्ड से, अगर हमने वर्ल्ड बैंक ने हमें लोन दिया है तो वो कैपिटल अकाउंट का पार्ट होता है. तो ये दोनों करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट मेक्स योर बैलेंस ऑफ payment. Okay, and if there any deficit in like balance of payment, then we have to, हमें अपने फॉरेक्स से पैसा निकालना पड़ता है और उसको फिर हमें एक तरह से बैलेंस आउट करना पड़ता है. So there are some important figures there given in this article. You should try to make note of it. Like it is like net inflows of foreign portfolio investment rise हुआ है, and there was like 18.6 billion accretion to foreign exchange reserve as on. तो ये सब आप देख सकते हो. आपको ये भी पता होना चाहिए कि इंडिया जो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट रेमिटेंस एक्सेप्टर है. अभी भी रिसेंट रिपोर्ट आई थी. So India is the largest remittance acceptor also, and it also adds to our like balance of payment. So these are like important takeaway from this article. You should make a note of what is difference between like current account, what are like component of the current account, balance of payment में क्या क्या component है उसको देखिए, क्योंकि आप देखोगे previous year questions में इस तरह के question जरूर यूपीएससी पूछती है. So moving to our section of questions from today's newspaper. So जो ये शॉक सिरिंज का क्वेश्चन आया था उससे दो क्वेश्चंस मैंने बनाए हैं. द विथ रेफरेंस टू शॉक सिरिंज डेवलप्ड बाय आईआईटी बॉम्बे, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. द शॉक सिरिंज यूजेस हाई एनर्जी प्रेशर वेव्स टू पियर्स द स्किन इंस्टेड ऑफ शार्प नीडल टिप. ठीक है, ये स्टेटमेंट. It delivers drugs through microjet that travels at a speed faster than the speed of sound. This is also correct. And the shock syringe can perform 1,000 drug delivery shot without the need for any replacement. So it's sort of misleading statement. आपने देखा कि सिरिंज में 3 पार्ट थे, ड्राइवर, ड्रिवन एंड 1 इंजेक्टर. तो एक पार्ट होगा उसको हमको हमेशा रिप्लेस करना पड़ेगा. तो ये स्टेटमेंट अपने आप में गलत हो जाता है. तो ओनली आंसर विल बी 1 and 2. नाउ सेकंड आंसर इज, सेकंड क्वेश्चन इज, consider the following statement regarding working mechanism and potential benefit of the shock syringe. So shock syringe relies on the pressurized nitrogen gas to create a microjet for drug delivery. This is also correct. The pressure and speed of drug delivery in the syringe are calibrated to minimize tissue damage. It is also correct statement. The shock syringe completely eliminates the need for immunization nozzle. So you should, when you are giving UPSC exam, you should always think of these like stark statement, which is like very going to like extreme end, like completely eliminate. तो ऐसा होता नहीं. अभी शॉक सीरीज ने, ये तो ट्रायल स्टेज में ही है, completely eliminate कैसे कर दिया इसने. तो अभी तक completely eliminate नहीं हुआ है. आपका नॉजल बेस्ड जो हमारी सिरेंजेस है वो एलिमिनेट नहीं हुआ. तो इस हिसाब से ये स्टेटमेंट 3 गलत हो जाता है. तो ओनली स्टेटमेंट 1 and 2 इज ऑल्सो करेक्ट. एंड देन द स्मार्ट सिटीज का जो आर्टिकल था उस पर एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन बना है. यू शुड ट्राई इट. Like critically analyze the impact of smart cities mission on education infrastructure in India, with focus on introduction of smart classroom, digital libraries. Discuss the challenges and opportunities in scaling sub initiative across the country, especially in the underperforming state. तो हमने ये बात करा कि challenges को आप कैसे data से substantiate कर सकते हैं. So discuss the increase in enrollment and its significance for the educational inclusion, कि कैसे smart जो बोर्ड इनिशिएटिव है ये ट्रांसफॉर्म कर रहा है इंडियन एजुकेशन को. हाईलाइट करिए रीजनल वेरिएशन को. देन एनालाइज करिए रोल ऑफ टीचर ट्रेनिंग एंड कंफर्ट लेवल इन यूटिलाइजिंग क्लासरूम फैसिलिटीज. उसके बाद आप चैलेंजेस कर सकते हैं लाइक डिस्पैरिटीज इन इम्प्लीमेंटेशन अक्रॉस स्टेट. लाइक हमने देखा कि वेस्ट बंगाल में ओनली 2% इसका पेनिट्रेशन हो पाया है. And examine opportunities such as leveraging digital resources for competitive exams, replicating successful model from a state like कर्नाटका. कोई केस स्टडीज वगैरह है उसको आप साइट कर सकते हैं.
and then suggest ways to ensure equitable distribution of resources and optimize the potential of smart cities mission in transforming the education. So it is a, you can always build around these the notes and make a comprehensive answer. So this is all from today's edition of Daily News Digest. We look forward to meet you tomorrow also. Thank you.